Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 82 for that topic, sexual reproduction in flowering plants. Now we have been learning regarding the pollinating agents and adaptations of the plants for that particular agents. Very important articles. Now here in that we have computed abiotic factors there. Abiotic agents जो है particularly water and the wind. With the examples of that wind pollinated plants, water pollinated plants, their adaptations. We have seen that. Please refer earlier video. Now in this video we have to learn biotic agents for classification for that pollination. Okay. Now biotic means animal, living. So biotic agents are the living agents I will say. And they are mostly the animals. The animals are helping for the pollination because you know that pollen grains cannot move from one plant to other plant. If cross pollination has to occur, pollen grains should get transferred from the flower of one plant onto the flower of other plant. And for that purpose, animals are carrying out the giving the help there. No doubt directly I will say, indirectly हो जाता है. पर वो क्या क्या है, कौन से एनिमल्स हैं? Particularly insects. Insect pollination is most common. In the last video also I told you. Okay. और उसमें भी particularly bees are dominating biotic agents of pollination. ये NCERT line को हमें ध्यान में रखना है. Because many of the times you will find MCQs straight on the CBSE textbook line to line. तो ये लाइन ऐसे ही दिए है. Insects, particularly bees, are dominating biotic agents of pollination. So which among the following are the biotic agents of pollination, dominating biotic agents of pollination? ऐसा अगर MCQ आता है तो वहां पे दिए होंगे 3, 4, 5 ABCD ऑप्शन. We have to select the correct. What is that? Bees. Madhumashi, honeycomb, honeybees. Isn't it? We know that. About 75 to 80% pollination of that flowering plants is carried out by bees. बहुत ही बड़ा proportion है. Isn't it? Then even birds and bats and snails can also carry out the pollination, I told you in the last lecture. Okay. Now other larger animals, this is also the sentence given from that CBSE book. उसके ऊपर भी गौर करो. Even larger animals like primates. Primates का ग्रुप हमको मालूम है. Mammals में, हम भी primates में आते हैं. Order primates, isn't it? Lemurs are there, tarsiers are there, monkeys, apes and human beings. Evolution में आपने learn किया होगा. So in that primate group, even some of the lemurs भी monkey के जैसे ही होते हैं. उसके पहले वाले हैं वो, monkey बाद में आए हैं. monkey तो आज हमारे पास भी, हमारे साथ भी है, हम में भी है, isn't it? तो particularly that primates such as lemurs or even arboreal animals. Arboreal means tree dwelling. जो trees पे रहते हैं, यानी monkeys, that animals which are living on the trees. Arboreal, tree dwelling plants, tree dwelling animals. They are monkeys particularly. Okay. Arboreals, rodents किसको कहते हैं? जो जमीन में घुस जाते हैं, वहां पे रहते हैं, घुसी रहती है वो. Isn't it? Particularly rodent. Even rats are also considered the rodents. Okay. And even the reptiles. It has been reported that some of the reptiles like garden lizard, gecko lizard, they are also carrying out pollination in some of the species. तो ये ध्यान में रखो. Isn't it? Whether it is true or wrong, which of the following is incorrect statement? Correct statement that some plants have been reported to get pollinated even by gecko lizard and garden lizard. Incorrect statement है या correct statement है? Correct statement है. Isn't it? Lemurs can also help in the pollination in some species. Isn't it?
तो ये सेंटेंस भी ध्यान में रखो, इवन लार्जर एनिमल्स लाइक प्राइमेट्स सच एज लेमर्स, देन arboreals मीन्स ट्री ड्वेलिंग, rodents यानी रैट के जैसे, then even reptiles like gecko lizard and garden lizard can carry out the pollination in flowering plants. But सबसे डोमिनेटिंग तो कौन है? इंसेक्ट्स, और उसमें भी bees. ओके, तो आई एम श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट, और इसको निग्लेक्ट मत करो प्लीज, डोंट निग्लेक्ट दैट पार्ट because MCQs can be framed on that. Okay. Now entomophily we shall learn. What do you mean by entomophily? Entomophily क्या है वो हम देखेंगे. ये ऊपर वाले पॉइंट्स तो आपके समझ में आ गए हैं. Okay. So just to avoid the confusion for lower points, I will remove that. अब ये lower points भी बहुत ही उतने ही important है जो हमको ध्यान में देने हैं. That entomophily, entomon means what? Entomon means insect. I told you earlier. So when pollination is carried out by the insects, then it is called as entomophily. Entomon is equal to insect, and that's why the pollination when carried out by insects, it is known as entomophily. Plants are called entomophilous. उनको इंसेक्ट लविंग प्लांट कहते हैं. एंटेमोफिलस मीन्स इंसेक्ट लविंग प्लांट्स. उनको इंसेक्ट के लिए अट्रैक्शन रहता है. इंसेक्ट लविंग प्लांट्स. ओके, तो इसमें ये दो तीन चीजें ध्यान में रखो. Which insects are carrying out pollination in the flowering plants? तो एक लंबी लिस्ट मैंने दिया है यहाँ पे. Insects like bees, अभी हमने बताया bees are most dominating, मधमाशा. ओके, मक्खी जो है मधुमक्खी. Then that butterflies, मधुमक्खी, butterflies, then flies, beetles, भूंगा कहते हैं उसे. Then that wasp, ants, moths, all are carrying out the pollination. The chief are no doubt insects. और insects के बहुत सारे varieties है. The biggest class there in the kingdom Animalia is the Insecta, that you must be knowing. Okay. So bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moths, etc. are the pollinating agents carrying out the pollination in flowering plants most dominantly. Okay. Then another is there that entomophilous plants. ये इसमें भी कभी कभी आता है MCQ. The list of entomophilous plants. Select the correct set of entomophilous plants or insect pollinated plants among the following. A B C D ऐसा दिया होगा. तो लिस्ट देखो मैंने यहाँ पे दी है. सनफ्लावर, जैस्मीन, रोज, सेस्ट्रम, रात रानी जिसे कहते हैं. ओके, सनफ्लावर इज देयर, जैस्मिन इज देयर, रोज इज देयर, सेस्ट्रम इज देयर. Then passion flower, bougainvillea, amorphophallus, yucca, salvia. So many examples are there and many more. और भी कई है, even mango etc. they are also there, isn't it? Cucumber, so many. So many examples of the pollinated plants are there which are pollinated by insects. तो ये ध्यान में रखो. सनफ्लावर, जैस्मीन, रोज, सेस्ट्रम, पैशन फ्लावर, कृष्ण कमल कहते हैं उसे, बोगेनविलिया, एमोर्फोफैलस, यूका, सेल्विया. इसमें पर्टिकुलरली पैशन फ्लावर, बोगेनविलिया, एमोर्फोफैलस, यूका, सेल्विया, they are showing some extraordinary points, and that we have to grasp, because that can be asked in the examination, even in the form of MCQ.
Now passion flower is particularly showing कैरोलाइन करोना. कैरोलाइन करोना नाम का एक, वहां पे करीना नहीं, करोना, कैरोलाइन करोना, यानी सपोज दिस इज द फ्लावर देयर. ओके, तो यहां पे ऐसे हेयरी आउटग्रोथ उसको दिखते हैं फ्रॉम ऑल साइड, एंड दैट गिव्स ब्यूटीफुल अपीयरेंस टू द प्लांट. So what happened there? This is called Caroline corona. Because of that hairy outgrowths, जो hairy outgrowths उसको दिख रहे हैं, the flower becomes attractive, isn't it? और वो flower attractive होने की वजह से that even the insect will get attracted. Insect क्या, हम भी attract हो जाते हैं, अरे कितना अच्छा फूल दिख रहा है. So that is particularly that part which is meant to attract the insects. पैशन फ्लावर में. बोगेनविलिया में क्या होता है हमें मालूम है. इन केस ऑफ बोगेनविलिया पेटालॉइड ब्रैक्ट्स आर देयर. पेटालॉइड ब्रैक्ट्स पिंक कलर के, पेपरी, पिंक पेपरी ब्रैक्ट्स जिसको हम कहते हैं. एक्चुअली बोगेनविलिया को अगर आप देखेंगे उसका फ्लावर, यू विल फाइंड दैट द पिंक कलर्ड पेपरी स्ट्रक्चर्स आर देयर आउटसाइड, और उसके अंदर कुछ छोटा पार्ट दिखेगा आपको, वो अंदर एक्चुअली फ्लावर है. इंटरनली द फ्लावर इज देयर, द आउटर इज द ब्रैक्ट विच इज पिंक कलर्ड. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट द इंसेक्ट्स गेट अट्रैक्टेड, फ्लावर बिकम्स अट्रैक्टिव, एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देयर, पेटालॉइड ब्रैक्ट्स इन केस ऑफ द बोगेनविलिया. अब देखो जनरल में तो कहते हैं, पर्टिकुलरली एडाप्टेशंस में ये आता है, द फ्लावर्स शुड बी वेरी मच अट्रैक्टिव, सेंटेड. रिमेंबर, उसमें एडाप्टेशंस भी हम लिख लेंगे, एडाप्टेशंस फॉर एंटेमोफिली, और बाद में ये 2-3 आखिरी वाली जो है वो भी देखेंगे. ओके, Adaptations for entomophily means special features shown by entomophilous plants to attract the insect. Adaptations for entomophily, special features to attract the insects. Okay, first of all, flowers should be large. तो लार्ज होना चाहिए, ब्राइटली कलर्ड एंड अट्रैक्टिव, ब्राइटली कलर्ड एंड अट्रैक्टिव टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स. इफ स्मॉल, फ्लावर्स अगर स्मॉल है, इफ स्मॉल, देन दे शुड form attractive inflorescence. They should form attractive inflorescence. Inflorescence हमको मालूम है, ग्रुप ऑफ फ्लावर रहता है, क्लस्टर ऑफ, नेचुरल क्लस्टर ऑफ मेनी फ्लावर्स टुगेदर. एज इन केस ऑफ द सनफ्लावर, सनफ्लावर एक फ्लावर नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ द फ्लावर वी नो. ओके, सो मोस्टली द फ्लावर शुड बी लार्ज, they should be brightly colored, they should be attractive, so that insects will get attracted easily. If not so, then at least if the flowers are small, then at least they should get collected in such a beautiful way that they're called inflorescence, that the attractive structure will be formed. Second thing is that they should be, flowers should be scented. flowers जो है वो scented होना चाहिए, with fragrance. फ्रैग्रेंस भी उनको होना चाहिए. रिमेंबर, सुगंध जिसको कहते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन देयर, द इंसेक्ट्स विल गेट अट्रैक्टेड. पर यहां पे मैं एक पॉइंट कहूंगा, सम प्लांट्स प्रोड्यूस फाउल ओडर्स टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स. फाउल ओडर्स in some
फाउल यानी डिसएग्रीएबल इन सम प्लांट्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज। ये फ्लाइज जो है उनको पर्टिकुलरली फाउल ओडर भी पसंद पड़ता है, isn't it? So for that purpose, to attract that particularly flies etc., sometimes the foul odors are also produced. Okay, in case of mango etc., it is found, even in case of mango. Then another is there that particularly the flowers should produce नेक्टर उनको तैयार करना चाहिए, isn't it? And even that flower should have abundant pollen grains. Nectar यानी honey, abundant pollen grains. So they are actually called the rewards for that nectar and pollen grains are considered as the rewards given by the flowers to the visiting insect. अरे आप आ रहे हो हमारे पास तो बिल्कुल आपका हम स्वागत करने वाले हैं, चलो खा ले लो, खाओ कुछ टेस्ट करो, क्वालिटी कैसी है देखो पोलन ग्रेन्स की, खाओ, खाते हैं। एंड देन नेक्टर तो फ्लावर्स में जो है वो हनी के लिए, इनके इंसेक्ट के लिए ही बनाया है। सो इंसेक्ट्स आर सर्चिंग दैट नेक्टर, शुगरी सिक्रीशन, एंड दैट्स व्हाई दे गेट अट्रैक्टेड देयर। ओके, तो ये नेक्टर पाने के लिए, पोलन ग्रेन्स पाने के लिए insects are coming again and again to the flower and then carrying out the pollination. तो क्या होता है, whenever insect sits on the flower there, अभी उस flower के size के अनुसार, then what happen there, that pollen grains released from the anther may get adhered to the body of that insect. For that purpose, the pollen grains have spiny, rough and spiny exine. Exine is the outermost covering of the pollen grains, we know. So that should be rough and spiny, so that can get adhered to the body of that insect. Any part, mouth parts को रहेगा या उसके particularly हेड को रहेगा और बैक को रहेगा, कहीं भी वो पोलन ग्रेन्स एडियर होके बैठ सकते हैं। एंड देन व्हेन दैट इंसेक्ट, उसका उस फूल से दिल भर गया, व्हेन इट विल फ्लाई अवे एंड गो ऑन द अदर प्लांट ऑफ सेम टाइप, सेम कलर एटसेट्रा, एंड विल सिट ऑन द अनदर फ्लावर, देन इट मे बी पॉसिबल दैट बाय मूवमेंट, ऐसा बिल्कुल जानबूझ के वैसा होता नहीं है, बट इनडायरेक्टली इट मे बी पॉसिबल, व्हेन दैट इंसेक्ट लोडेड विद द पोलन ग्रेन्स on its body will sit on the flower of other plant, then that pollen grains from that body of insect may get captured by the stigma of the flower of other plants and pollination becomes successful. अब आप कहेंगे ऐसा कहाँ होता है, ऐसा कितने चांसेस कम है ऐसे होने के, but no doubt this must be happening there, as we are enjoying so many kind of the fruits in so big number there. फ्रूट मार्केट में जाएंगे तो इतने सारे अलग अलग टाइप के फ्रूट्स आपको दिखेंगे और कितना ट्रिमेंडस उसका प्रोडक्शन होता है। तो इतने फ्रूट्स बनते हैं, इसका मतलब फ्लावर्स दे हैव बीन फर्टिलाइज, फ्लावर्स फर्टिलाइज हुए, इसका मतलब पॉलिनेशन इज सक्सेसफुल, एंड द मेजर पॉलिनेशन इज इंसेक्ट पॉलिनेशन। So definitely a pollination हो जाता है। So these are there some of the adaptations shown by that plants to attract the insects. अब इसमें particularly ये जो plants है, Amorphophallus, Yucca and Salvia, these points are really wonderful, amazing points, and they are somewhat different, जरा हटके है। So that we are going to discuss in our next lecture, no doubt. But इतना जो भी कुछ बताया है, all that are also equally important. Okay, so
I'm sure, I'm confident that you have understood this part very properly. So do subscribe to my channel XIIth Biology. You will get MCQs also there. And do like and share this video to your friend circle. We shall meet again in the next lecture. Thanks a lot.